वेलकम टू सी.एडुकॉम। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल में जो एडवर्टाइजमेंट आया है इंडियन पोस्ट की ओर से, इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 948, जिसमें क्वालिफिकेशन है क्लास 10 और वैकेंसी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक जीडीएस का अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड में। और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 11/12/2020। तो इस वैकेंसी के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है कैंडिडेट्स, उन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ज़रूर देखना चाहिए ताकि अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इस वीडियो को डिटेल्स में देखते हैं। इंडिया पोस्ट की ओर से है ये वैकेंसी। इसका लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2020। इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल पोस्ट है 948 ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी अंडर नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होगा ऑनलाइन में बिफोर 11 दिसंबर 2020, जिसमें पोस्ट है नंबर 1 में ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, नंबर 2 में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, नंबर 3 में डाक सेवक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 948। इसमें कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है EWS 92, OBC 35, PWD A 2, PWD B 4, PWD C 5, PWD DE 1, SC 100, ST 349, unreserved 360, total 948। नेक्स्ट इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना होगा ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड with passing marks in mathematics, local language और English में, having been studied as compulsory or elective subjects, conducted by any recognized board of school education by the government of India or state governments or union territories in India, shall be a mandatory educational qualification for all approved categories of Gram Dak Shavaks. Next, compulsory knowledge of local language. The candidate should have studied the local language at least up to 10th standard। 10th standard तक local language studied होना पड़ेगा as declared by the state government। The compulsory or elective subjects as declared by the state government or as per constitutional provisions relating to the 8th schedule of Constitution of India। List of official languages of the state are given in the advertisement। Next, age limitation. The minimum and maximum age for the purpose of engagement to GDS post shall be 18 and 40 years respectively as on 12 November 2020। The date of notification of the vacancies। Date of notification of vacancy में candidates का age 18 to 40 years होना होगा। Permissible relaxation in upper age limit for the defined categories as under शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कैंडिडेट्स के लिए नो रिलैक्सेशन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज WD 10 years, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्लस OBC 13 years, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्लस SC ST 15 years। Next, application fee. Applicant belonging to the category unreserved OBC or EWS male or trans men have to pay a fee of ₹100। ₹100 देना होगा। Payment of fee is exempted for all the females or trans men candidates, all SC ST candidates, or all PWD candidates। Candidates who require to make the payment has to visit any head post office or other identified post offices in India। Name of the post offices are available in the website appost.in/GDS online। Or the applicant can also pay the fee through online mode of payment using the URL provided in the home page। All recognized credit or debit cards and net banking facility can be available for this purpose। Charges available for usage of debit card or credit cards and net banking as per the rules from time to time will be levied to the candidates। Next, how to apply online. Only online application will be accepted from the candidate। Candidate who desires to apply online will have to register himself or herself in the portal through
indiapost.gov.in में और appost.in/GDS online with effect from 12 November 2022 11 December 2020 with the following basic details to obtain the registration number. registration number के लिए number 1 name in capital letter as per class 10 certificate marks memo including spaces. Number 2 father name. Number 3 mobile number unique as for one registration number. Number 4 date of birth. Number 5 gender. Number 6 community. Number 6 age type of disability. Number 8 state in which 10th class passed. Number 9 board in which 10th class passed. Number 10 year of passing 10th class. Number 11 10th class certificate number optional. Number 12 transgender certificate issued by the district magistrate as per the transgender persons. Only one registration is allowed for one candidate. The same registration number should be used for submission of applications during the cycle to any of the circles. Mobile number mapping is mandatory for registration. In case of any duplicate registration is found by altering the basic details, all the candidates relating to all such registrations will be removed for consideration of selection. Any candidate who forgot the registration number can retrieve the registration number through option forgot registration. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.